Good evening, viewers. This is Apex News India. I am Dipka Slingdo welcoming you to the news. Let us first take a look at the headlines. And now the news in detail. PM Narendra Modi hoists the Dharma Dhwaja at Sri Ram Temple in Ayodhya. साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था। जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है। हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। Security forces in Kharsang, Arunachal Pradesh have detained 3 youths from Assam's Tinsukia district for allegedly planning to join the banned militant outfit Alpha Independent. Acting on intelligence input, the trio, identified as Nabutam Baulari,
Jayanta Konwar and Monjit Neog were found hiding for several days while awaiting instructions from a Alpha I leader. Authorities have tightened surveillance along the Assam-Arunachal border to prevent further recruitment attempts. মাইথঙৰ হয়। মোৰ নাম নৱোত্তম বাউলাৰী, দেউতাৰ নাম হিৰেণ বাউলাৰী। আমি বেংগলোৰত কাম কৰি আছিলোঁ। বেংগলোৰত কাম কৰি থাকোঁতে অৰুণোদয় দহোটীয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি আলফা জইন কৰিবলৈ আহি আছিলোঁ। আলফা জইন কৰিব আহি থাকোঁতে খাচাঙত আমাক ধৰিলে। নেক্সট মোৰ নাম জয়ন্ত কোঁৱৰ, মই কাকপথাৰ মাইথঙৰ হয়। আমি বেংগলোৰত কাম কৰি আছিলোঁ। বেংগলোৰত কাম কৰি থকা টাইমতে ছাৰ এজনৰ লগত কথা পাতি আহোঁতে আমাৰ আলফালৈ জইন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। আমি আলফালৈ জইন কৰিবলৈ আহোঁতে আমাক খাচাঙত আমাক ধৰিলে। নেক্সট মোৰ নাম মনজিত নেওগ হয়। মই বেংগলোৰত কাম কৰি আছিলোঁ। কাম কৰি থাকোঁতে লগৰ ছাৰজনৰ লগত কথা পাতি আলফা জইন কৰিবলৈ আহি থাকোঁতে খাচাঙত ধৰা খালোঁ। The Arunachal Pradesh Indigenous Youth Organization, APIO, along with two other youth bodies, has announced the deferment of its proposed 12-hour statewide ban that was scheduled for November 25th. The decision came after the State Home Minister invited the groups for a roundtable meeting on December 5th to be attended by senior police officials and key stakeholders. APIO clarified that the postponements should not be viewed as a withdrawal of their core demands. The organization continues to press for the demolition of the alleged illegal Jama Masjid near the helipad in Naharlagun, the closure of weekly markets and the deportation of alleged illegal immigrants. सपोर्ट नहीं करता है तो कल को आप लोग को ये प्रॉब्लम को सहना होगा। जनता भी अपना अपना राशन पानी को रेडी रखिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए। हमारा मांग पूरा नहीं होगा, हमारा बंद कॉल जो है इनडिफिनिट जा सकता है 100%। और सारा दुनिया को देखने दो कि अरुणाचल में क्या चल रहा है। आने और अरुणाचल का बच्चा समझता है जो बंद कॉल में हम लोग को साथ देना है और सरकार को भी हम वही बोलेगा। तो आप भी चाहता है कि हमारा स्टेट जो है बांग्लादेशी का अंदर रहना है। सबसे बड़ा सवाल टीम APIO अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिक्लेयर करता है ऑफिशियली 12 आवर्स कैपिटल बंद। ये 25 नवंबर 2025 में हम लोग का फर्स्ट फेज 12 आवर्स कैपिटल को बंद करने जा रहा है। तो हम लोग यहाँ में इतना डिस्कस करने का अभी जगह नहीं है। सरकार को भी जो हम लोग कॉपी देना था दिया, पब्लिक डिस्प्ले करना था हमने किया, सब कुछ हम लोग डिक्लेयर कर चुका है। और उन लोग का तरफ से जो कॉपी आया है उससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। टीम APIO सरकार जो है जो हम लोग अपील किया है उसको काम नहीं करके उल्टा वो कमेटी को सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है। इसलिए हम लोग टोटली उसे सहमत नहीं है। तो आज टीम APIO का साथ में कोलैबोरेशन हमारा टीम ANYO, ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल आईफा हमारा जुड़ के आज हम लोग 12 आवर्स कैपिटल बंद करने का ऐलान करता है। और उस बीच में मैं तारो सोनाम लिया प्रेसिडेंट APIO हमारे यहाँ जितना भी बिजनेस कम्युनिटी है उन सब से रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि हमारा आइमवा है, ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और नाहरलगुन में बाजार वेलफेयर सोसाइटी नाहरलगुन, निर्जुली बाजार कमेटी निर्जुली, वहाँ का जितना भी जो लीडर्स है, प्रेसिडेंट GS है, चेयरमैन है, सबको हम लोग की तरफ से अपील है कि ये बंद कॉल में आप लोग साथ देना है, क्योंकि आप सब लीडर से पहले इंडिजिनियस है। उसका साथ साथ में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो यूनियन है आफ्ताब को भी हम लोग अपील करता है। साथ ही साथ हमारा जो बस यूनियन है, ऑटो यूनियन है, टेम्पो यूनियन है, ट्रैकर यूनियन है, टाटा मोबाइल यूनियन है, टैक्सी यूनियन एक्सेट्रा, जितना भी है सबको हम लोग अपील करता है ये 25 का बंद कॉल में आप लोग हम लोग को साथ देना है। ये हम लोग फर्स्ट फेज बंद कॉल करने जा रहे हैं हम लोग। उसके साथ साथ में जितना भी यहाँ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, CBOs है, लाइक NES है, मोम्पा में सोकपा, आका कम्युनिटी और जितना मेजी वेलफेयर सोसाइटी, TCS, जो तागेन कल्चर सोसाइटी है, तानी सिपुन दुकुन, गालो वेलफेयर सोसाइटी, आदिबाने केबंग और हमारा ताई कामती सोसाइटी, नोक्ते काउंसिल, सिंगपो काउंसिल और इडू मिसबी वेलफेयर सोसाइटी, सबको हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये बंद कॉल में साथ देना है। जो जो यहाँ में कैपिटल में रहता है
और साथ ही साथ हम लोग का तरफ से अपील रहेगा, जितना भी यहाँ स्टूडेंट्स जो यूनियन है, लाइक अंशु है, आपसू है, आन्या है, आमसू है, और साथ ही साथ जितना भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन को और डीएनजीसी स्टूडेंट्स यूनियन को, हिमालयन स्टूडेंट यूनियन को, दोईमुख स्टूडेंट यूनियन को, ज्योतिर्पमा कॉलेज लॉ स्टूडेंट यूनियन को और लेकी वुमेन कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन, सभी को हम लोग अपील करता है इस बार का जो हमारा 12 आवर्स कैपिटल बंद को आप लोग समर्थन देना है, साथ देना है। क्योंकि टीम आपियो जो है हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जैसे वेल स्टैब्लिश बोल के, वेल सोर्स बोल के नहीं है, फिर भी आज जो हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है, ये समाज के लिए हम लोग लड़ने जा रहा है। यहाँ में हमारा टीम पोस्टर पकड़ के बैठा हुआ है, हम लोग ये बोल रहा है कि लैंड फर्स्ट, फेस्टिवल नेक्स्ट, अरुणाचल फर्स्ट, इलेक्शन नेक्स्ट। जब आपका जमीन नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगा, तो आपका कब इलेक्शन करेगा? आपका जमीन जगह नहीं रहेगा तो आप फेस्टिवल कैसे मनाएगा? इसलिए आप यो स्टैंड है उन लोग का तरफ से, जो भी सरकार का तरफ से जो हमको कल EAC का तरफ जो कॉपी आया है, इससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। इसलिए हमने 25 को हमने फर्स्ट स्पेस बंद कॉल डिक्लेयर किया है। अगर उस बंद कॉल में सरकार नहीं सुनता है तो हम लोग इनडिफिनिट कर सकता है ये बंद कॉल जो है। और ये समय हम लोग इसलिए दिया है ताकि आप लोग जनता भी अपना अपना राशन पानी को रेडी रखिए। और उस बीच में मेरा टीम को अगर सरकार जो है डिटेन करता है, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हम लोग इसलिए प्रॉब्लम होगा बोल रहे हैं, हर जगह में अभी SIR को लागू करने का बाद बांग्लादेशी जो आप ऑटोमेटिकली भाग रहा है, तो हमारा यहाँ से बांग्लादेशी को क्यों हम लोग नहीं भगा सक रहा है? इमिग्रेंट्स को क्यों नहीं हटा सक रहा है? और यहाँ में जिस प्रकार से अवैध रूप से मस्जिद पंजाखाना बना के रखा है, इसको डिसमेंटल क्यों नहीं कर रहा है सरकार जो है? सुन के अनसुना क्यों कर रहा है? इसलिए आज आप जो क्लियर स्टैंड हो गया, ये जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, हमारा बंद कॉल जो है इनडिफिनिट जा सकता है 100%। देखिए ये जो बंद कॉल में हम लोग जो है, हमारा टीम को हम अभी बोला है, कुछ भी होता है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, पहला बात। और दूसरा है हमारा जो कंसर्न जो यहाँ का जो लोग है, इंडिजिनियस लोग भी समझना है। हम यहाँ में कोई हिंदू को लेकर, क्रिश्चियन को लेकर या मुस्लिम को लेकर नहीं है। हम लोग का कंसर्न सीधा है यहाँ का अवैध रूप से बांग्लादेशी, घुसपैठ वाला बांग्लादेशी के खिलाफ है। और इलीगल तरह से जिस प्रकार से उन लोग का जो यहाँ में प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, रेशियो को देखकर है, जो अपना आप से मनी कलेक्शन करके यहाँ में हर जगह पंजाखाना बना रहा है, हर जगह मस्जिद बना रहा है, इसका खिलाफ है। आप लोग यहाँ में हमको ये मुद्दा को लेकर, अगर आप लोग आने और नाचल का बच्चा समझता है, ये 25 का जो हमारा जो बंद कॉल में हम लोग को साथ देना है, सब इसमें क्रिश्चियन बोलकर नहीं, हिंदू बोलकर नहीं, सिख ईसाई बोल के नहीं, बुद्धिस्ट बोल के नहीं है, इवन मुस्लिम बोल के भी नहीं। जो कन्वर्ट वाला मुस्लिम भी आपको इंडिजियस मानता है तो हमको सपोर्ट करना है। और सरकार को भी 3 persons were detained late night on Monday, November 24th, near the Amtali bypass in Agartala, after police recovered illegal firearms from their possession during routine patrolling, said Superintendent of Police West Tripura, Namit Pathak. From Siachen to canvases, 2 officers inspire Shillong with stories of art and courage. The Spectrum Biennial Shillong, held on 23rd to 24th November at the Rhino Training Complex Garrison Ground, turned into a masterclass in passion and perseverance as Colonel D.P. Singh and Colonel K.C. Monappa showcased art born from discipline, instinct and unbreakable spirit. Colonel Singh, whose hyper-real photographs were captured during his 32 years in uniform, reminded young people that talent survives anywhere, saying, "Creativity has always been my bliss. Even in Siachen, I used to paint. You can't make 24 hours into 25. You just manage your time well." On your own
expensive ground, it's nice. Be in the office 24/7. You need an outlet, right? So thanks for being here. I'm Payal. I work in Station Cell, and this is a very nice experience in this exhibition. Both Munapa sirs and Devi sirs work is extremely mind-blowing, and where Munapa sirs work is like it's very deep and like we can get out different meanings. Likewise with DP sir's photography and paintings, like all are amazing. Thank you ma'am. Okay, ready? 1, 2, 3. To youngsters would be that if we can make our passion pay, if we can get into fields where our passion exists and we can actually follow our passion to earn money, that will be the best. There can be nothing better than this. But even if we have to purpose go for a job which is not actually my passion, but still I have to take out time one way or the other. We have to manage the time, like I said, 24 hours or 24 hours. We have to make certain sacrifices. Maybe we'll have to sleep a little less, maybe we'll have to be on the phone a little less. But yes, time can be taken out. So it's all about management basically and balance. Okay, thank you so much. Good. So, Niharika, as you have seen, my art, basically, I'm firstly an untrained artist. Most of my paintings are pure passion, and it's at the spur of a moment, something that I fancies my eye, a thought that has come into my head. I immediately go onto a medium. Now that would be interesting. That medium could be anything. I just like to take you over here. So it's not a classic canvas that I use. My medium is everything that's available. A case in point, this was an old, used, discarded door. I got my carpenter to varnish it, smoothen it, and then I let my imagination run over here. My concept basically is anything that's old, at the moment that is not necessarily useful, most of us tend to discard it. I try to infuse a new life into it. By new life, I want to just create something that would appeal to people and still ensure that this product or this particular so-called discarded thing is useful forever. It's almost like recycling, right? So similar as this. In this painting, this is an old notice board. In the army, we have notice board to put a notice and pin. This is called a cork board, right? So I utilize this cork board. That's why I've left it very crude to show my audience that once again, anything old, anything that's useless can be brought back to life by infusing some kind of a painting or some kind of a utility value to it. In this painting, I've depicted 4 female figures over here. I've utilized DAL-E, the AI. Over here, what I want to depict is, as you would have seen, all my paintings somehow has the feminine form.
feminine form dominates all my paintings. In an effort to provide special awareness on traffic rules and Motor Vehicles Act to students, the Nongpor Police Station, along with the Nongpor Traffic Branch, has received wide appreciation for taking the initiative to educate the public on safe driving practices, in which their efforts have significantly contributed to improving driving behavior along the national highway. As part of this initiative, students of Mahatma Gandhi University MGU Bernihart, including law students, on Monday attended the traffic awareness program, expressed their satisfaction and happiness witnessing the hard work of the police in addressing issues related to traffic violations, and also stated that as students, they strongly support the efforts of the Riboy District Police. Keep in our mind that the safety of the pedestrian. In a development seen as another major blow to Maoist ranks, barely a week after top commander Madhvi Hidma was killed, 15 active Maoists carrying a combined bounty of Rs 48 lakh surrendered before the Sukma police on Monday. The group includes 4 hardcore operatives of the PLGA's Battalion No. 1, the formation once led by Hidma himself. Core leadership surrenders. Sukma Superintendent of Police Kiran Chavan said the group includes PPCM cadres 4, ACM cadres 2, party members 3, and 8 members of frontal organizations. Among them are 5 women and 10 men. Several in the group carried significant rewards. पुलिस बल और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, उसके अलावा जो क्षेत्र में लगातार कैंप खुले जा रहे हैं अंदरूनी क्षेत्र में, इससे प्रभावित होकर आज 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनपे 48 लाख का इनाम है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो बटालियन नंबर 1 के 4 नक्सली है। उसके अलावा कुंटा एरिया कमेटी, किसारान एरिया कमेटी, किरलापाल एरिया कमेटी के भी नक्सली है। मैं इस मौके पे सभी नक्सलियों से यह अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका लाभ उठाए। जो पत्र आया है वो नक्सलियों का जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एरिया है उस क्षेत्र का है। तो उस क्षेत्र में जो सरकार है और जो पुलिस का बल है उसके हिसाब से उसका प्रत्युत्तर देगी। अपना जो इलाका है दक्षिण बस्तर डिवीजन है उसमें जो रणनीति है वो अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। हम लगातार नक्सल अभियान जारी है, क्षेत्र में कैंप खोलना जारी है और जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं, उनको भी हम अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। In a disturbing incident that has triggered diplomatic concern, a woman from Arunachal Pradesh has alleged that she was detained and harassed for nearly 18 hours at Shanghai's Pudong airport after Chinese immigration officials refused to recognize her Indian passport. The woman, identified as Pema Wang Thongdok, said officials declared her passport invalid because it mentioned Arunachal Pradesh as her birthplace. Thongdok, who currently resides in the UK, was travelling from London to Japan on November 21st and had a scheduled 3-hour transit halt in Shanghai. What was meant to be a routine checkpoint soon escalated into a prolonged ordeal. According to her posts on X, Chinese immigration officers stopped her and after scanning her documents, told her that her birthplace was part of China. They said, "My Indian passport is invalid because I was born in Arunachal Pradesh," she wrote, claiming that officials mocked her and insisted she should apply for a Chinese passport. So I basically wrote an email copying in the Ministry of External Affairs, the PMO office, CM of Arunachal Pradesh, Foreign Secretary.
So whatever information I could get hold of the higher ups in the government, basically I have written out to them. Obviously, such an incident shouldn't happen to someone who is just a normal citizen. Like, I don't even work for the government, so I don't have a say in such diplomatic matters. And just to be harassed for so many hours, I think it might be quite a tactic used by the Chinese government to hassle citizens of India, especially from Arunachal, because it was the weekend as well. So they know that government offices are closed in such hours. But yeah, so that's how it all panned out. And I'm just grateful to Mr. Rajat and his team from the Indian Embassy who helped me get out of there finally around 10:30 p.m. So I was stuck for quite a while there. This brings me to the last question, ma'am. Any expectation and assurances given from the side on any expectations going forward? What would be your take? I would say, obviously, I want to raise this awareness that, residents and especially residents of the northeast of India should not face such, A video has surfaced capturing the moment a deadly explosion occurred outside Pakistan's paramilitary force headquarters in Peshawar, an attack that left at least 3 security personnel dead on Monday. The blast took place at around 8 a.m. on one of the city's busy roads after 3 suicide bombers attempted to storm the Federal Constabulary FC headquarters. According to officials, one attacker detonated himself at the main entrance while 2 others managed to infiltrate the premises before being killed in retaliatory fire. The newly emerged CCTV footage shows the sheer force of the explosion as panic spread across the area. Defence Minister Rajnath Singh says ships from friendly foreign nations are increasingly coming to Indian shipyards for the complex refits, and this is a clear recognition of India's capability, reliability and close competitiveness. Our ambition is clear. We want to become the preferred sustainment and repair hub for the entire Indo-Pacific region. India's shipbuilding ecosystem today stands on the strength of the multiple world-class platforms that reflect our technological maturity and industrial depth. In the defense sector, our shipyards are delivering some of the most advanced results in the Indo-Pacific. Complex refits, and this is a clear recognition of India's capability, reliability and cost competitiveness. Our ambition is clear. We want to become the preferred sustainment and repair hub for the entire Indo-Pacific region. And I would like to take this opportunity to highlight various fields that can be explored in the Indian shipbuilding sector. India's shipbuilding ecosystem today stands on the strength of the multiple world-class platforms that reflect our technological maturity and industrial depth. In the defense sector, our shipyards are delivering some of the most advanced vessels in the Indo-Pacific. The indigenous aircraft carriers INS Vikrant, built by the Cochin Shipyard Limited, represents a major milestone. India is among the select few nations capable of designing and constructing such a complex platform. Garden Reach shipbuilders and engineers and Mazgaon Dock shipbuilders are producing state-of-the-art surface combatants such as steel frigates, destroyers, and ultra-modern anti-ship warfare, shallow water. And on the winter session of the Assam Legislative Assembly, Congress MLA Sivamoni Bora says the Nelly case has already been laid in 1987 and it can't be laid again. We will protest against this. वो जो भास्कर बरुआ ने बोला सेम ही बात 42 इयर्स बिफोर 42 इयर्स का जो तिवारी कमीशन का जो नेली का जो केस अभी वो ले करने के लिए बोला है, लेकिन एक बार 1987 में ले हो गया
हो गया, दोबारा तो नहीं हो सकते, देखा जाएगा। हम लोग तो चर्चा में है, कल भी चर्चा किया, हमारा CLP लीडर्स या हम ऑल MLAs चर्चा किया है। ले एक बार होने के बाद 2 बार नहीं होना चाहिए, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। Well, dear viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.